Hello everyone, welcome to our YouTube channel. In this video, we will discuss the Lake Isle of Innisfree poem, complete solution, सब क्वेश्चन गुड़ाक आंसर करवा। प्रीवियस वीडियो रे यार एक्सप्लेनेशन सरी जाइए। जदि देखी ना ताले तले डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार प्लेलिस्ट दिया जाइए देखि परिबो। एबे स्टार्ट करवा क्वेश्चन आंसर। थिंकिंग अबाउट द पोएम, ए पोएम विषय रे किछि भाबिबा एवं क्वेश्चन आंसर करवा। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस इज इनिस्फ्री, इनिस्फ्री केउं प्रकार स्थान अटे। थिंक अबाउट, या विषय चिंता करो कि द थ्री थिंग्स द पोएट वांट्स टू डू व्हेन ही गोज बैक देयर। स्टांजा 1, स्टांजा फर्स्ट दिया जाइए कि से सेठा गले कौन करेंगे पोएट। आम जानते कि ये जो इनिस्फ्री यह एक पीसफुल एक आइल अटे, मीन्स एक आइलैंड अटे। आउ यार आंसर एमती लिख द पोएट वांट्स टू बिल्ड ए स्मॉल केबिन ऑफ क्ले एंड वाटल्स। पोएट जनक सेठे जाकि एक छोट केबिन रूम बनइबे क्ले आउ वाटल्स रे, काठी एवं गछर जो डाल पत्र ता सहित क्ले माटी रे बनइबे। बी, ही वांट्स टू प्लांट 9 rows ऑफ बीन्स। सी, ही वांट्स टू हैव ए हाइव फॉर हनी बीज। नेक्स्ट क्वेश्चन डबल आई, व्हाट ही हियर्स एंड सीज देयर एंड इट्स इफेक्ट ऑन हिम। से सेठारे कौन शुणती एवं कौन देखती एवं तांकु यह कौन प्रभाव पकाए, इट्स इफेक्ट। आंसर लिखिबो ही हियर्स द क्रिकेट सॉन्ग। B, he hears linnets flying in the sky. C, he sees glimmering midnight and glowing rooms. Triple I question, what he hears in his heart's core, हृदयर गभीरतार से कौन शुणती। Even when he is far away from Innisfree, जदिओ से इनिस्फ्री ठारू बहुत दूर रे अछंती तेबे मध्य। आंसर लिखिबो when the poet is far away from Innisfree, he hears the sound of the lake water washing the shore in his heart's core, which resonates deeply within him, even when he is far removed from Innisfree. से बहुत दूर थिले मध्य। This connection to the natural sounds of Innisfree continues to soothe him no matter where he is. Here the word resonates means to produce a deep, clear or continuing sound. Resonates deeply within him, तांको हृदय रे यह शुभुला जो लेक वाटर तार शोर रे ता कूल रे जो स्ट्राइकिंग बड़े होता। इवन व्हेन ही इज फार रिमूव्ड फ्रॉम इनिस्फ्री, जितेबाला मध्य से इनिस्फ्री ठारू दूर रे थिले सेतेबाला भी शुभुला। आउ दिस कनेक्शन टू द नेचुरल साउंड्स ऑफ इनिस्फ्री कंटिन्यूज टू सूद हिम। सूद मीन्स काम, तांको शांत कराउथला नो मैटर वेयर ही इज, से जेउठारे थांतु ना काहेकि। Then next question, by now you may have concluded that Innisfree is a simple natural place full of beauty and peace. वर्तमान तुम्हें निश्चित भाव में जानी सारे बा यही निष्कर्ष उपनीत हेलानी जे इनिस्फ्री जो जगटा यह एक साधारण आउ प्राकृतिक स्थान जोठारे भरपूर अच्छी सुंदरता एवं शांति। हाउ डज द पोएट कंट्रास्ट इट विथ वेयर ही नाउ स्टैंड्स। वर्तमान पोएट जोठारे अच्छे से वर्तमान सिटी रे अच्छे रोड रे किंबा जो पेमेंट रे ता सहित या किपरि कंट्रास्ट करछंती। कंट्रास्ट मीन्स कंपैरिजन टू शो डिफरेंस बिटवीन दिस टू। तो ये दुईटा मध्य से डिफरेंस दर्शाइबा कौन कहते। यार आंसर एमती लिखिबो द पोएट कंट्रास्ट द वाइब्रेंट नेचुरल ब्यूटी ऑफ इनिस्फ्री विथ द डल एंड लाइफलेस रोडवेज एंड ग्रे पेमेंट्स ऑफ द सिटी ही नाउ रिसाइड्स। से वर्तमान जोठारे अच्छंती सहरर जो रोडवे किंबा पेमेंट्स रे ता सहित एटा एक डल एंड लाइफलेस रोडवेज बोली कहते। यह एक निर्जीव किंतु अपर पक्षरे जो इनिस्फ्री को वाइब्रेंट नेचुरल ब्यूटी बोली कहते। नेक्स्ट सेंटेंस, द टर्म ग्रे सिंबलाइजेस द absence of color and vitality, highlighting the city's lack of liveliness compared to Innisfree's serene and colorful environment. Here serene means calm, peaceful. Then next question, do you think Innisfree is only a place or a state of mind? तुम्हें ये इनिस्फ्री को यह एक वास्तव स्थान किंबा यह आमर जो स्टेट ऑफ माइंड आम मन रो एक अवस्था बोली तुम्हें दर्शाइब। डज द पोएट एक्चुअली मिस द प्लेस ऑफ हिज बॉयहुड डेज। वास्तव में पोएट जनक तांकर पिलादिन सेगुड़ा को से मिस करछंती कि मन पकाउछंती कि। आंसर लिखा इनिस्फ्री इज नॉट जस्ट ए फिजिकल लोकेशन। इनिस्फ्री एक केवल लोकेशन जो फिजिकल लोकेशन नुहे, वास्तव तो अच्छी आयरलैंड रे अच्छी, बट ऑल्सो ए स्टेट ऑफ माइंड फॉर द पोएट एवं यह आहरी
कविंकर स्टेट ऑफ माइंड अटे मनर एक अवस्था अटे व्हाइल इट रिप्रेजेंट्स द पोएट्स बॉयहुड मेमोरीज यह कविंकर पिलादिनर स्मृति को उज्जीवित करुची इट सिम्बलाइजेस एन आइडियलाइज्ड एस्केप फ्रॉम द chaotic सिटी लाइफ टू ए प्लेस ऑफ पीस एंड सेरेनिटी तो यह आहरी मध्य सिम्बलाइज करुची कि आइडियलाइज्ड एस्केप हियर आइडियलाइज्ड एस्केप मीनिंग इज परफेक्ट वे ऑफ गेटिंग अवे तो परफेक्ट वे बाहर को पळे आसवा से जो सिटी लाइफ रू टू ए प्लेस वेयर पीस सेरेनिटी पीस एवं शांति स्थान को द पोएट लॉन्ग्स फॉर द ट्रैंक्विलिटी दैट Innisfree offers a contrast to his current surroundings. Though he is physically distant from Innisfree, he carries its soothing memories within him, which continuously resonate through the sound of the lake water in his heart. Next question अछि look at the words the poet uses to describe what he sees and hears at Innisfree. Innisfree जहाँ देखते एवं जहाँ शुणती जो वर्ड गुड़ाक यूज कर लक्ष्य कर फास्ट हूँ आई beloved glade double I evenings full of linnet swings triple I lake water lapping with low sounds then question what pictures do these words create in your mind तुम मन रे एगुड़ाक किपरि पिक्चर आणुछि आंसर लिखिबो beloved glade evokes an image of a forest clearing filled with the gentle buzzing of honeybees creating a tranquil and natural atmosphere. Then double I, evenings full of linnets wings, paints a picture of a red-orange sky brimming with linnets. These beautiful birds enhance the place's scenic beauty as they flutter and fly, adding a sense of liveliness to the evening. And triple I, lake water lapping with low sounds immerses us in a peaceful scene where the lake's gently flowing water produces a soothing sound contributing to the serene ambience of the setting. Here ambience means atmosphere of a place. तो इस स्थानर atmosphere को then next question look at these words এই word मान को लक्ष्य करो peace comes dropping slow dropping from the vales of the morning to where the cricket sings. What do these words mean to you? এই ওয়ার্ড গুড়ার অর্থ কোণ হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক কমস ড্রপিং স্লো ফ্রম দ্য ভেলস অফ দ্য মর্নিং হোয়াট ডাজ টু হোয়ার দ্য ক্রিকেট সিংস মিন্স এটি আনসারে লিখিবা দ্য গিভেন লাইন্স ইন্ডিকেট দ্যাট পিস অফ মাইন্ড ক্যান বি স্লোলি অ্যাকোয়ার্ড ফ্রম দ্য ন্যাচুরাল সারাউন্ডিংস ইট ইজ পিস দ্যাট কমস ড্রপিং স্লো ফ্রম দ্য ভেলস অফ দ্য মর্নিং দ্য ফ্রেজ টু হোয়ার দ্য ক্রিকেট সিংস ইন্ডিকেটস এ পিসফুল প্লেস হোয়ার ওয়ান ক্যান হিয়ার দ্য ভাইব্রান্ট সাউন্ডস অফ নেচার sounds such as the songs of crickets at the time of dawn. And next page एबे देखिबा कि तुम एई पोएम रो पूरा लास्ट रे गौतम बुद्धंकर एठी गोटे कोट अछि एटा को बुझिबा एवं या सहित तुमरो एई यूनिट रे जो गोटे आमे प्रोज पढ़ले जो आइंस्टाइन कर विषय रे एवं एई पोएमटा पढ़ले ता संगे कंपैरिजन करके बुझिबा गौतम बुद्ध एठी कोन कहैछंती गौतम बुद्धंकर जो कोटटा एमती अच्छी हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट कंटेनमेंट द ग्रेटेस्ट वेल्थ फेथफुलनेस द बेस्ट रिलेशनशिप माने एठारे जो हेल्थ कहले उत्तम स्वास्थ्य आउ कंटेनमेंट मीन्स बीइंग हैप्पी एंड सैटिस्फाइड विथ व्हाट यू हैव तुम पाखरे जतिक अछि सेतिक तुम संतोष लाभ करबा को कंटेनमेंट कहै छै सेटा ग्रेटेस्ट वेल्थ बोली कहल जे सबठारु भलो सबठारु बड़ संपद होची कंटेनमेंट जेतिकी तुम पाखे संपद अच्छी से खुशी रुह फास्ट कहते हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट जदि तुम सुस्थ तुम अच्छ ताहले सेटा सबठारु बड़ उपहार तुम आउ फेथफुलनेस कहले विश्वसनीयता तो ये फेथफुलनेस मीन्स बीइंग लॉयल ट्रू एंड ट्रस्टवर्दी विश्वसनीयता यह हूँ बेस्ट रिलेशनशिप यह सबठारु भल संपर्क अटे या टिके सिंपल भाव रे आमे बुझिबा फास्ट हेल्थ विषय कौन कहते गौतम बुद्ध हेल्थ इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट इफ वी आर हेल्दी वी कैन स्टडी वर्क एंड एंजॉय लाइफ विदाउट हेल्थ नथिंग फील्स गुड सो गुड हेल्थ इज द बिगेस्ट ब्लेसिंग इन लाइफ देन कंटेनमेंट विषय कौन कहते कंटेनमेंट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ बीइंग हैप्पी विथ व्हाट वी हैव इज बेटर दैन हैविंग लॉट्स ऑफ मनी बट ऑलवेज वांटिंग मोर
ए satisfied heart is richer than a bag full of gold. गोटे satisfied heart ताहा गोटे फुल बैग सुना ठारू मध्य अधिक धनी. Then faithfulness is the best relationship. When we are loyal, honest and true to our friends and family, our relationships become strong. Trust and truth make the best bond. तापरे याकू ए ब्यूटीफुल माइंड सहित टिके लिंक करिवा. ओके, आइंस्टाइन स्टोरी आमे पढिथिले. In this story, we learn about Albert Einstein, who had a curious mind and loved science. His life shows us, तांको लाइफ हमको दर्शाए, health is the greatest gift. तांको स्टोरी सहित याकू लिंक करिवा गौतम बुद्धंकर. Einstein's healthy and active mind helped him explore the secrets of the universe. तांकर जो healthy और active mind थिला सेथि पई एटा संभव हो पल्ला कि से ए विश्व ब्रह्मांडर सिक्रेट्स को मध्य लोकलोचन को आनी पारे, अनुसंधान कर पारे. Then contentment is the greatest wealth. Einstein focused on learning and discovering rather than fame or wealth. Fame किंबा wealth पछरे न पड़ी कि से खाली फोकस कले तांकर लर्निंग उपरे एवं डिस्कवरिंग उपरे. Being happy with his experiments and ideas gave him a real satisfaction. Next, faithfulness is the best relationship. Einstein stayed faithful to his curiosity and his dedication to science, which helped him achieve great discoveries. Next, link with Lake Isle of Innisfree सहित याको लिंक करिया. East, the poet name East dreams of living in a quiet, peaceful island far from the noisy city. His life reflects Buddha's message. First, health is the greatest gift. Living in nature keeps the body and mind fresh. Then contentment is the greatest wealth. एटा कहिसंदी बुद्धदेव या सहित तुलना करिया. The poet is happy with simple things like a small cabin, bees and the lake. Then faithfulness is best relationship. The poet is true to his dream and inner desire for peace. तापरे या को टिके कंपैरिजन कर दबा. A beautiful mind, Einstein shows mental curiosity, focus and dedication. True wealth is knowledge and satisfaction in learning. Then the Lake Isle of Innisfree shows peace, simplicity and connection with nature. True wealth is contentment in small joys. अल्प अल्प छोट छोट खुशी मानकरे निजे संतुष्ट होई रहिबा एटा होची वास्तव वेल्थ बा संपत्ति अटे. नेक्स्ट, बोथ टीच बुद्धा's wisdom. Health, contentment and faithfulness matter more than fame, money, luxury. Next, एबे फाइनल सिंपल सेंटेंस रे बुद्धा's message is seen in both stories. Einstein shows how faithfulness to your curiosity and being satisfied with learning brings happiness. Then East shows how contentment and peace in nature bring happiness. Together they teach that a real happiness comes from good health, a content heart and loyal relationships or dedication. एतिकिरे पूरा चैप्टर कंप्लीट हो क्वेश्चन आंसर सहित. If you are new in our channel, please subscribe our channel and press the bell icon. To attend our online class, you can call us or send WhatsApp message. Our mobile number is 6372482818. Please like the video and share among your friends. Write or comment in comment section. এই पोएम रो अन्य वीडियोस गुडा को देखिया पई तळे डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे यार प्लेलिस्ट दिया जाई छि. ए पोएम रो तुम ताको चेक करि परिबो. थैंक्स फॉर वाचिंग.